Hi guys, welcome to EduTap. So as you all know that recently SEBI has released the notification of SEBI Grade A 2023 legal examination. The phase 1 of which is to be conducted on 5th August 2023 and phase 2 is to be conducted on 9th September 2023, which means you have hardly 40 days for the phase 1. So guys, this is a great opportunity for the law graduates who want to become a part of SEBI as a SEBI Grade A legal officer. But the question is, can you prepare in the time span of 40 days for this examination? So the answer is yes, you can prepare in the time span of 40 days and you can also become a SEBI Grade A legal officer. Now the next question can be, how can I prepare? So guys, here is the solution. You can prepare through our SEBI Grade A 2023 legal live crash course. So guys, we have launched this live crash course for those who want to become a SEBI Grade A legal officer. Right now the question is what you will get as a part of this course. So guys, as a part of this course you will get the live classes, right? So this is the unique feature of this course, that you will get the live classes for both phase 1 and phase 2. So if I talk about paper 1 and paper 2 of phase 1 and paper 1 and paper 2 of phase 2, so you will get live classes for all the papers of both the phases. More than 60 live classes will be there to cover each and every important thing which is relevant and important for your examination. And apart from the live classes, what you will get guys, you will get chapter wise quiz. So if I talk about paper 1 phase 1, so paper 1 phase 1 mein you will get chapter wise quiz. So here you can see, for example, quantitative aptitude, right? So quantitative aptitude mein here you can see the chapters, basic fundamentals, HCF, number system. Inside these chapters you will get chapter wise quiz, and at the end you will get the sectional test also. So 10 sectional test will be given as a part of this course also, right? Same is the case with reasoning and same is the case with English as well. If I talk about general awareness, so general awareness में you will get latest 6 month करंट टैप मैगजीन, जिसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके सेबी में पूछी जाएंगी. तो लेटेस्ट 6 मंथ की मैगजीन आपको मिलेगी विच इज डाउनलोडेबल, एंड यू विल ऑल्सो गेट द क्विज एसोसिएटेड विथ इट. एंड ऑल्सो गाइज यू विल गेट मिसलेनियस रिपोर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, एंड अपार्ट फ्रॉम द रिपोर्ट you will get the quiz related to it, which is very very important, right, for the SEBI examination. And for the GA also you will get 10 sectional test. Here you can see you will get the 10 sectional test as a part of GA as well. If I talk about paper 2 of phase 1, right, paper 2 of phase 1 mein here you can see whatever syllabus is mentioned in the notification for phase 1 paper 2. So here you can see, here is the syllabus: Constitution of India, contract law, code of civil procedure, transfer of property, etc etc, right? So for these, all these acts, what you will get, you will get act wise quiz. For example, here you can see for constitution जो भी parts mention है आपके syllabus में, so उसके according ही आपको यहाँ पे quiz मिलेंगे. For example, Constitution of India part 1 quiz, ठीक है, यहाँ पे पार्ट 3 के लिए भी क्विज रहेगा, पार्ट 4 के लिए, पार्ट 4 ए के लिए. तो जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग चैप्टर्स, उसके अकॉर्डिंग यू विल गेट द क्विज here as well, right? So this is about the paper 2 of phase 1. If I talk about paper 1 of phase 2 guys, that is descriptive English, right? If I talk about descriptive English, so for descriptive English here you will get the recorded video. Live classes तो हैं ही, but you will get the recorded video as well. So here you can see concept class with related to essay writing, pressy writing, RC. You know the weightage of descriptive English is 1/3, जिसको count होता है, जो आपके final selection में count होता है guys. So 1/3 is the weightage of descriptive English. So ये बहुत important है, and for this descriptive English you will get the live classes and as well as recorded classes, and you will get along with that essay topics. जो important essay topics हैं you will also get as a part of this course. And if I talk about phase 2 paper 2, right, which is again a legal paper. So if I talk about phase 2 paper 2, so यहाँ पर भी आपको सेम ही मिलेगा कि आपको एक्ट वाइज जो भी आपका सिलेबस मेंशन है, लाइक फॉर एग्जांपल क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ एविडेंस, कॉर्पोरेट लॉज, सिक्योरिटीज लॉज, इसके अकॉर्डिंग आपको क्विज मिलेंगे गाइज. फॉर एग्जांपल इफ आई ओपन सिक्योरिटीज लॉ, सो हियर यू कैन सी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के क्विज हैं, सेबी एक्ट के क्विज हैं, डिपॉजिटरीज एक्ट के क्विज हैं, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे गाइज यू नो द वेटेज ऑफ सिक्योरिटीज लॉज दिस टाइम हैज बीन इंक्रीज टू 40%, which was earlier 20% in 2022. जिसका मतलब है if you have prepared securities laws, so you will easily get 40 marks out of 100, right? So ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और बहुत ही टेक्निकल भी है सिक्योरिटीज लॉज. दैट इज वाई लाइव क्लासेस में इनको बहुत अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा ताकि आप इनको
अच्छे से स्कोर कर पाए, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर यहाँ पे आप कर पाए। तो यहाँ पे आपको रेगुलेशंस जो भी मेंशन है, यू नो वेरी वेल कि इस बार सिलेबस भी चेंज हुआ है, तो कुछ रूल्स ऐड किए गए हैं, कुछ रेगुलेशंस ऐड किए गए हैं, तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग क्विज और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्विज और एक्ट के अकॉर्डिंग क्विज, सारी की सारी चीजें आपको उसी बाइफरकेशन में मिलेंगी जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, राइट। एंड अलॉन्ग विद दिस क्विज गाइज, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, यू विल गेट द लाइव क्लासेस, जो कि बहुत ही यूनिक फीचर है, जो कि एक बहुत ही पेन पॉइंट है एस्पिरेंट्स का, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें सोर्स नहीं पता चलता कैसे प्रिपेयर करें। सो गाइज दैट इज वाई वी हैव लॉन्च दिस कोर्स, जहां पे लाइव क्लासेस भी होने वाली है, राइट। इसके अलावा गाइज यहाँ पे चीजें खत्म नहीं होंगी, यू विल गेट फुल लेंथ टेस्ट एज वेल। सो फुल लेंथ टेस्ट आपको फेज 1 के भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी फुल लेंथ टेस्ट, तो यहाँ पे पेपर 1 के पूरे फुल लेंथ टेस्ट हैं और यहाँ पे पेपर 2 के भी फुल लेंथ टेस्ट है, राइट। सेम इज द केस विद फेज 2 ऑल्सो। सो फेज 2 में गाइज यू विल गेट द फुल लेंथ टेस्ट, हियर यू कैन सी the full length test for phase 2, so you will get full length test for phase 2 as well, that is paper 1 में यहाँ पे आप देख सकते हैं and paper 2 में here you can see। and guys you know कि इस बार syllabus जो change हुआ है वहाँ पर descriptive element को add किया गया है in paper 2 में, so that is subject to evaluation। so as a part of this course you will get your answers evaluated, right। जो भी आप descriptive answer लिखेंगे for paper 2 वो हम proper उसको evaluate करके आपको feedback भी provide करेंगे, so that you can improve and you can give your best in the examination। so guys this is all for this course, so those who want to avail this course, you can check the link in the description box below and you can avail this course। thank you very much।